Yes, friends, my name is Mohammed Anwar. Today we will solve some MCQ, important MCQs for the chapter that is force and motion. Uh, in MCQs को we have solved the method मैं आपको बता दूं कि मैं स्टेटमेंट करूँगा और साथ में इनके ऑप्शन भी रीड आउट करूँगा और 5 सेकंड हैं मैं खामोश रहूँगा इन 5 सेकंड में आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 5 सेकंड के बाद मैं जो है आपको अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो बता दूंगा और आपने मेरे ऑप्शन आपके ऑप्शन के साथ आपको कंपेयर करना है तो ठीक हो तो पहले आपको ठीक ना हुआ तो उसको ठीक कर लीजिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्यू है the displacement time graph of particle moving on plastic is parabola, straight line, circle, hyperbola. Correct option is straight line. इसमें आप देखें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यानी आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली चेंज होगा इक्वल टाइम के अंदर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो इस वजह से आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें आपको वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन मिलेगी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी Now, question number 2. Which of the following changes when particle is moving with uniform velocity? Speed, acceleration, velocity, position. The correct option is position. इसमें आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सिर्फ आपको वेक्टर होगा जो आपकी वेलोसिटी को बताएगा वही चेंज होगा Question number 3 the displacement time graph for the two bodies A and B are straightly inclined at 60 and 30 to time axis. Find the ratio of the series. Option number 3 ratio 1 is to 3 ratio 1 ratio 3 and 1 ratio square root. Next option is A 3 ratio 1. Question 4 a ball is projected at 45 degrees. Its horizontal range is 10 meter. Velocity of projection is 5 meter per second, 15 meter per second, 10 meter per second, 20 meter per second. The option is option C, that is 10 meter per second. Describe the numerical value of the ratio of average velocity. Average is always less than 1, always more than 1, always equal to 1, equals to or less than 1. The correct option is option D. Now come to question number 6. That is, if momentum is increased by 2 times, the kinetic energy is increased by 2 times, 3 times, 4 times, or remains same. The correct option is 4 times. Kinetic energy का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर m जो है वो कांस्टेंट होगा जब आपका मोमेंटम डबल होगा तो जो वेलोसिटी है वो भी डबल हो जाएगी उसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर की वजह से 4 हो जाएगा तो यानी उसका जो ऑप्शन होगा वो जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा Question 7 is an athlete completes one round of a circular track of radius or in 30 seconds. What will be the displacement or at the end of 1 minute? The correct option is option B, which is 2 और देखें कि आपको 30 सेकंड में रेडियस यानी आवर कंप्लीट हो रहा है तो 60 सेकंड में 2 आवर कंप्लीट कर लेंगे Question 8 the velocity time graph of the body is shown. It implies that at B the force will be options are F is 0, F opposes motion, F towards the motion or none. The correct option is option B, which is F opposes the motion.
Question number 9. The velocity time graph are inclined at 30 and 45 degree with the time axis. The ratio of their acceleration is options are 3 ratio 2, square root 3 ratio 1, 1 ratio square root 3, and none. The correct option is option C, that is 1 ratio 3, square root 3. Now comes to question 10, that is, if constant force is applied to a body, it moves with uniform. Options are velocity, momentum, acceleration, or kinetic energy. Correct option is option C, that is acceleration. According to Newton's second law of equilibrium में अगर constant force लगाई जा रही है किसी बॉडी पे तो उसकी जो यूनिफॉर्म होगी वो acceleration होगी. Question 11. At maximum height in projectile motion, velocity and acceleration are parallel, perpendicular, anti-parallel. At maximum height, v equal to 0. The correct option is option B, that is perpendicular. यानी velocity और acceleration जो है वो projectile की height पे maximum हो जाएंगे. Question 12 है in projectile motion, if air resistance is ignored, the horizontal motion is with constant velocity, constant acceleration, variable velocity, or constant retardation. The option is constant velocity, यानी आपकी जो बॉडी है वो horizontally जब मूव करेगी तो constant velocity के साथ मूव करेगी, ना उस पे कोई फोर्स एक्ट करेगी, ना कोई और एजेंसी जो उसकी मोशन को है वो अफेक्ट करेगी. Question 13 is if R is maximum horizontal range of projectile, then the greatest height attained by it is options are R, 2R, R by 2, and R by 4. Option is R by 4. Option range है वो maximum height है वो R by 4 की. Question 14. A body of momentum mv equals the fall elastically changes in momentum is options are minus 2 mv, minus mv, mv, and 0. The correct option is minus 2 mv. Question 15. A force of 10 Newton acts on a body for 5 seconds. What will be the change in momentum? Options are 10 Newton second, 50 Newton second, 5 Newton second, and 100 Newton second. Option is option B, that is 50 Newton second. Question 16. The escape velocity for a body projected from Earth is 11 km per second. If projected at 45 degrees, it will be. Options are 11 km per second, 44 km per second, 22 km per second, and 11 meter per second. Option A. Question 17 कहता है जी, according to first law of motion, mass of the object is qualitative measure of its. Options are inertia, force, momentum, and moment of inertia. Question 17 का जो right option है वो option A है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. Question 18.
A force of 5 Newton acts on a body of 5 kg for 5 seconds. The rate of change of momentum is options are 25 Newton, 5 Newton, 50 Newton, and 125 Newton. The correct option for question 19 is option B, that is 5 Newton. Question 19, the range of projectile at 30 degrees is R. At the angle of 60 degrees, the range will be. Options are R by 2, 2R, R by 4. Correct option is R. इस तरह के जो आप मिडिल एंगल जो था जिसमें मैक्सिमम रेंज आती थी वो 45 है, तो 5 से 15 प्लस किया जाए तो 60 बनता है और माइनस किया जाए तो 30 बनता है। जिस तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो आपका लार्जर एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है वो आप उसमें अगर डिविजिबल है तो जो आपकी रेंज होगी वो सेम होगी, दैट इज आर। Question number 24 is in nature always occur in single form, pair form, triple form, any form. The correct option is pair form. यानी आप न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक देख रहे हैं, एक एक्शन होता है तो दूसरा रिएक्शन होता है, यानी आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको इक्वली फोर्स लगाएगी। Question 21, a body thrown up with a velocity of 9.8 meters per second reaches a maximum height of. Options are 9.8 meters, 4.9 meters, 19.6 meters, 44.1 meters. The correct option is option B, that is 4.9 meters. Question 22, a ball bouncing off a wall. Options are obeys law of conservation of energy, Newton's second law, obeys law of conservation of momentum, or Newton's third law. The correct option is Newton's third law. The ball है वो स्ट्राइक करके वापस आती है, थर्ड लॉ के मुताबिक होता है एक्शन एंड रिएक्शन। Question 23, the distance covered by a body with uniform acceleration in time t starting from rest is. Options are half of 80 square vt, half of 80 power 3 by 2, या none. The correct option is option A, that is half of 80 square. यानी आपकी बॉडी जो है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और रेस्ट से उसने मोशन जो है स्टार्ट की है। तो इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके s इक्वल टू vit प्लस हाफ 80 स्क्वायर vi, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट है, इस वजह से vi 0 हो जाएगी, तो जो डिस्टेंस होता है वो s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। Question 24, the rate of change of momentum of free fall body is. Options are 0, mg, more than mg, less than mg. The correct option is mg, यानी आपकी जो बॉडी है वो टोटली अपने वेट की वजह से ही नीचे जाएगी। Question 25, pull of the earth on the mass of 20 kg on the surface of earth is. Options 20 Newton, 196 Newton, 1960 Newton, and none. The correct option is option B. इसको आप निकाल सकते हैं, मैथ आपको 20 kg के में है और वो पुल ऑफ द अर्थ यानी जो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो क्या हो जाएगी, g = 9.8। इसमें आप जो है वो मोमेंटम वाला फॉर्मूला जो है करेंगे, f = del p और del t, और वहां से मोमेंटम की p = mv। Question 26, a force of 6 Newton acts on a body at the rest and having a mass of 4 kg. During the time of application of
force, the body attains a velocity of 30 meters per second. The time for which the force acts on the body is 180 seconds, 20 seconds, 45 seconds, or 24 seconds. The correct option is option B, that is 20 सेकेंड. इसमें mass जो है 4 kg है, force 6 न्यूटन है और velocity जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है. तो mv को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल लेंगे 4 into 30 that is 120 kg. एंड फिर आपने जो है मोमेंटम वाला सेकंड लॉ यूज करना है, F equals to POT. जो है आपने जो टाइम निकालना है तो टाइम को साइड पे ले जाएंगे और जो मोमेंटम है आपने निकाला है 120 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 20 सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. Question 27. Body moves along a semicircle. Ratio of its distance to displacement is pi, pi by 2, 2 over pi and 0. The correct option is option B, that is pi by 2. Semicircle है, full circle का pi होता है तो half circle का pi by 2 हो जाएगा. Question 28. If the velocity time graph is straight line parallel to time axis, then it means the body is moving with uniform velocity, moving with uniform acceleration, at rest, or none of these. टाइम ग्राफ है आपका, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन. Question 29. The direction of acceleration of a body moving in a straight line is along velocity, perpendicular velocity, towards the origin, in none of these. Right option is along velocity. Sorry for that word. It is the correct option for the 28 is option A, that is moving with uniform velocity. Sorry that parallel to time axis था, जिस वजह से है वो moving with uniform velocity कर रही है. अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, पैरेलल ना होती किसी भी एक्सिस पे, ना वेलोसिटी की और ना टाइम पे, तो तब वो जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती. लेकिन जो है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गई है जिस वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. Now question number 30, that is two particles are projected with the same velocity but at the angle of projection 45 minus theta and 45 plus theta. Then their horizontal ranges in the ratio of 1:2, 2:1, 1:1, 90 over 20, and 90:20, 2 theta. The correct option is 1:1. 45 से ऊपर प्लस थीटा जो है वो देख लेंगे या 45 माइनस थीटा इक्वली है डिविजिबल होंगे तो वो रेशियो की सेम हो जाएगी. Question number 31 है free falling body under the gravity is an example of uniform acceleration, uniform velocity, non-uniform acceleration, none of these. The correct option is option A, that is uniform acceleration. यानी आपकी बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है. नाउ क्वेश्चन जब आपकी बॉडी जो है वो करती है. क्वेश्चन नंबर 32 है द डिक्रीज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या नन ऑफ दीस. ऑप्शन है जी रिटार्डेशन. डिक्रीज है, इंक्रीज कर रहा होता तो एक्सप्रेशन होती और जो डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन, यानी जो वेलोसिटी की कमी होती है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको आप रिटार्डेशन कहते हैं.
Question 33, distance covered by free falling body in the first second of its motion will be 4.9 meter, 9.8 meter, 19.6 meter, or 10 meter. The correct option is 4.9 meter. आपकी बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है तो उसमें जो पहले रेस्ट पे थी इसमें भी है 0 हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर बन जाएगा तो जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी टी की वैल्यू 1 उसको स्क्वायर ले लें और 1/2 है तो 9.8 डिवाइडेड बाय 2 तो राइट ऑप्शन इज 4.9. क्वेश्चन 34 है जी व्हेन del t यानी टाइम चेंज होता है approaches to 0 then the acceleration of the moving body is options are average acceleration, uniform acceleration, instantaneous acceleration, none of these. The correct option is option C, that is instantaneous acceleration. जब कोई लिमिट लगा दी जाए यानी आपके टाइम जो है अप्रोच करता है 0 को तो वो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं. Question 35, if the acceleration of the body is negative then the velocity time graph will be 0, positive, negative, or infinity. Option is negative, yani downward direction. Question number 36, which is for a fixed force larger is the mass of the body and its acceleration will be smaller, greater, same, or none. It is smaller. Newton's second law के मुताबिक F equals ma अगर फोर्स फिक्स रखी जाए और मास ऑफ द बॉडी अगर इंक्रीज करता है तो जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होगी वो स्मॉलर होनी चाहिए यानी मैं आपको बताया था कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंजर्व रहना चाहिए एक चीज बढ़ती है तो दूसरी को कम होना चाहिए. Question 37, Newton's second law of motion is also called the law of gravitation, acceleration, inertia, and none of these. The correct option is law of acceleration. जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है और न्यूटन सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है. Question 38, when a climber reaches the top of mountain, his weight is now greater, it is slightly smaller, or its mass is slightly smaller, or none of these. The correct option is option B, that is his weight now is now slightly less. The question number 39 here. The product of the force and time is called the change in momentum, impulse, force, or acceleration. The correct option is momentum. Question 40 है, which of the following quantity is not a vector? Momentum, reaction, velocity, none of these. इनमें से कोई भी चीज जो है वो स्केलर नहीं है, सब जो है वेक्टर है तो इस वजह से none of these. When a bullet is fired by a gun, the gun moves backward with a velocity equals to that of bullet, greater than that of bullet, less than that of bullet, and none of these. The correct option is option C, that is less than that of bullet, क्योंकि mass में फर्क आ जाता है तो velocity में फर्क आएगा. The law of the conservation of linear momentum is valid for atoms only, molecules only, other system only, or all of them. The correct option is all of them.
मोमेंटम जो है वो सब के लिए रहता है, एटम में, मॉलिक्यूल में, बाकी सिस्टम में भी। 43, the relative speed of approach is always equals to relative speed of separation. It is in partial elastic collision, perfectly elastic collision, inelastic collision, or none of these. The correct option is perfectly elastic collision, यानी आपकी जो स्पीड है अप्रोच की दो बॉडी की वो इक्वल होनी चाहिए, collision and collision के बाद जो सेपरेट होते हैं तो उसकी स्पीड है रिलेटिव को इक्वल होनी चाहिए। ये परफेक्टली इलास्टिक collision में पाया जाता है जो कि आइडियल सिस्टम होता है। But for question had, if two bodies of equal masses moving in the same direction collide elastically, then their velocities are added, subtracted, do not change, or exchange. The correct option is exchanged. Masses equal है तो जिस वजह से आपकी जो velocities हैं वो आपस में exchange हो जाएंगी। Question 45. Force can also be defined as the rate of change of momentum, product of meter per second and del V, and both A and B, none of these. The correct option is rate of change of momentum. Question 46. If a body whose mass is much less than a body at rest collides with it elastically, then it bounces back with same velocity, half of the velocity, double velocity, equals to the velocity. The correct option is same velocity. For 7 question, a number of bodies are such that they can exert a force upon one another and no external agency exert a force on them, then they are said to be inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, a rectangle, and an isolated system. The correct option is an isolated system. Isolated system वो होता है जिसमें आप जो है ना एनर्जी लॉस होती है ना गेन, और उसमें जो एक्सटर्नल जो फोर्स होगी उस सिस्टम के अंदर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि जो कुछ भी होगा वो सिस्टम के अंदर होगा और वो कंजर्व रहेगा। A force 100 Newton acts upon a body for 5 seconds. What will be the change in momentum? Options are 200 Newton second, 500 kilogram per second, 20 kg meter per second, or 120 Newton second. The correct option is option B. Question 49. To improve the jumping record, a long jumper should jump as high as possible at an angle of 60, at an angle of 45, or at an angle of 45 degrees. The correct option is option C, 45 डिग्री पे एंगल पे जो आपका बॉडी फेंकी जाए तो वो उसकी रेंज ज़्यादा होती है। 50. Range of the projectile is same for the following angle appears 0 and 45 degree, 35 and 55 degree, 15 and 60 degree, and 30 and 70. The correct option is option B, यानी जो आपको 45 है उससे आप 10 प्लस कर 55 10 माइनस कर 35 हो जाएगा, यानी आपका लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल डिविजिबल हैं, तो इस वजह से उनकी रेंज जो है वो सेम होगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और देखें बच्चों, ये नोट्स जो हैं वो आप अपने पास सेव कर लें। एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्स एंड मोशन चैप्टर के, जो कि काफ़ी दफ़ा टेस्ट में पूछे जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ भी आई होगी।
Okay, thank you, Ji.